नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे टेनिस खेलने के लिए। मैं खेलता हूँ लॉन टेनिस, दिस इज़ माय स्पोर्ट एक्चुअली। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में आके पूछ रहे थे अबाउट द वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके, यूसीबी का क्या प्रोसेस है उसके बारे में। सो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस आई विल सॉर्ट इट आउट इन दिस वीडियो, एंड इफ यू नीड इट आई विल मेक द अनदर वीडियो ऑन सम फ्यू अदर क्वेश्चंस that will be related to the international students. So right now I'm in the Spencer Park. ये स्पेंसर पार्क है, मेरे घर के पीछे ही है। This is a very beautiful park बोल सकते हैं। और इसी के सामने मेरे साइड में एक स्कूल है, आप लोग देख पा रहे हो, पता नहीं मुझे, बट ये एक स्कूल है। तो अभी हम जाएंगे टेनिस खेलते खेलते। मैं आप लोगों से बात करूँगा जैसे बीच में टाइम मिलेगा। I'll speak about what we say, what the visa interview processes and everything that is related to the international student. तो अभी हम जा रहे हैं टेनिस खेलने के लिए वॉर मेमोरियल। और मेरे पीछे आप लोग सीनरी देख सकते हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रिटिश नेबरहुड है मेरे पीछे वाला, जिसको वॉर मेमोरियल बोलते, उसी के पास वाला एरिया है। मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी। तो वॉर मेमोरियल एक्चुअल में वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो लोग शहीद हो गए थे ब्रिटिशर्स, ये उनके याद में बनाया गया है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट्स एन वॉर मेमोरियल। तो अभी हम वही जा रहे हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे। तो अभी हम वही जाने के बाद, लेट मी क्रॉस द रोड फर्स्ट। Guys, if you are an international student and if you are planning to come here in UK in 2026 or in 2027, so for that you should be knowing about your living expenses here. After coming here, you should be having around 60% of your funds in your bank account to survive here for like 5 to 6 months. To survive here, you should be having around 60 to 70% of the fund in your bank account. And the second thing is, after coming here, you will be having like if you're booking an in-suite room, so for that you will go around 800 pounds in Birmingham. But if you're planning to come in Coventry, like I live in Coventry right now and my university is in Birmingham, so for me one in-suite room goes around 500 pounds. So it's pretty much good living in Coventry and traveling to the Birmingham, because traveling expenses are pretty less than living there. So बात करते हैं अभी लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में। So guys, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप प्लान कर रहे हो 2026 और 27 में यहाँ आने का, सो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। सो बैड न्यूज़ पहले बता देता हूँ। सो बैड न्यूज़ इज़, जो लोग प्रीवियस आए हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पे आए हैं, लाइक मैं आया था 2025 में, तब रुपीज़ कुछ तो भी 115 या 16 था, 116, वो अभी इंक्रीज़ होके 130 हो गया है। तो आप लोगों को फंड्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप लोग बर्मिंघम में अकोमोडेशन लेने का सोच रहे हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड 800 pounds फॉर एन इन-स्वीट रूम। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू लिव इन कोवेंट्री, लाइक आई लिव इन कोवेंट्री बट माई यूनिवर्सिटी इज़ इन बर्मिंघम, सो मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज़ प्रीटी गुड रादर दैन लिविंग इन बर्मिंघम। सो कोवेंट्री में आप लोगों को एक इन-स्वीट रूम 500 pounds तक मिल जाएगा, which is pretty good. So maltings, UCB के स्टूडेंट्स के लिए एक बैड न्यूज़ है। UCB के स्टूडेंट्स मोस्टली maltings में ही जाते हैं। जो मेरे अकोमोडेशन है, मेरे इसका उसी में जाते हैं, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसका जो पीरियड है, मतलब जो रहने का पीरियड है, वो बहुत ही कम है। सो लाइक जो बैच मेरे साथ आई थी
और वो लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मॉल्टिंग्स में रह रहे हैं, दे हैव टू क्लियर द रूम नाउ, लाइक उनका चेकआउट हो चुका है और मेरा चेकआउट होना बाकी है। मेरा चेकआउट अभी सितंबर में होगा, लाइक मेरा 1 ईयर टू 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और उन लोगों के 1 ईयर से थोड़ा कम है कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव एज वेल। सो मैं तो सजेस्ट करूँगा यू कम टू कोवेंट्री एंड फाइंड अ गुड अकोमोडेशन हियर, इट्स अ रियली नाइस प्लेस। दैट्स इट गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ वॉर मेमोरियल। जैसे कि मेरे पीछे तुम लोग नज़ारा देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा एक पार्क है वॉर मेमोरियल, और यहाँ पे टेनिस खेलना है। Are planning to come here for your abroad studies, this video is for you guys. This is not just related to my university or my course, it is related to every university and every course, because visa interviews are like same for every universities. For the first question that he is going to ask you about your courses, your modules. Like I have mentioned it in the previous video that we don't have subjects here, we have modules. For my course, I was having 5 modules. 3 were in the first semester. So it was like managing across culture, international gastronomy, culinary artistry and creative techniques. So you should be having a proper knowledge about those modules. He's going to ask you what is that related to, what is managing across culture, what is international gastronomy, and everything related to that. The second thing that he's going to ask you, and it's a major question, it's about your expenses. You should be having a proper knowledge that how much funds that you have in your bank account. You should be having a proper documentation, bank statements and everything related to that expenses thing. Like he's going to ask you for that documentations as well, and you have to prove that online. Anyhow, that interview is going to held
Like anyhow you have to prove that. And the third thing that he's going to ask you is related to your accommodations address, your university's address. Like if you guys are planning to come for UCB, University College Birmingham, then you should be having proper knowledge about its address, its postcode, and where you have booked your accommodation in advance. And if you're planning to go for any other accommodation rather than your university's accommodation, then you should be knowing about that as well, and you have to prove that you have booked that accommodation in advance before coming in here. These are the major questions that he's going to ask, and he's going to process your interview based on these 3 questions. Rather than this, he's just going to ask you for your personal information and where you have studied before, and that's it. And the third question, he'll ask you about why you're going to come here in UCB or the university that you have selected, and that's it. I'm ending this vlog now. मैं एंड कर रहा हूँ बिकॉज सब कुछ हो गया है और मैं जा रहा हूँ अभी चिकन लेने के लिए एलडी में. अगर तुम लोगों को चाहिए कि ग्रॉसरी की भी शॉपिंग करूँ या उसके भी वीडियोज़ आप लोगों को दिखाओ, तो नीचे कमेंट में कर देना कि ग्रॉसरीज के एक्सपेंसेस कितने आते हैं और क्या आते हैं, मैं वो भी सब वीडियो बना दूँगा. एंड दैट्स इट. आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड UCB और एनी अदर कोर्सेज, यू जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा. एंड दैट्स इट. So my Instagram link is there in the description. Go and check it out. If you have any doubts or any queries, just ask me in the comment section and I'll answer you guys, and if needed I'll make a video on that as well. I'm getting a call right now, so stay tuned for that. I'll meet you guys in the next vlog. Stay tuned. Bye bye.